औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ अपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ, और होप कि आपको बहुत पसंद आएगी। और इसमें यह है कि आज मेरा अपना लेक्चर तो जो ऑब्वियसली मैं दे रहा हूँ वो तो मैं देता रहूँगा, कंटिन्यू करूँगा, मगर साथ ही साथ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे एक वीडियो मिली जो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ सबके साथ शेयर कर दूँ। तो वो इसके बाद जो है जो मैं ये आपसे बात करूँगा उसका तरीका बताऊँगा कि किस तरह से आपने उसको पढ़ना है। तो उस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आपको क्रिटिसिज्म की, आपको जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है ऑफ डिफरेंट थिंग्स उसकी समझ आएगी। आपको पता लगेगा कि क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह से किया जाता है। तो मुझे मेरे अपने जो सुपरवाइज़र थे वहाँ पे इंग्लैंड में, जो उनमें से एक जो सबसे ज़्यादा जो मुझे जिन्होंने डॉक्टर जॉन, ही इज़ अ प्रोफेसर, पहले वो प्रोफेसर थे इन एट लफरा यूनिवर्सिटी। तो ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन जिससे मैं आज तक मिला हूँ। तो ही इज़ रादर। तो उसमें इस तरह से है कि उन्होंने मुझे जो है जितना समझाया डॉक्टर जॉन ने, वो आप कभी भी इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है आई लर्न फ्रॉम हिम। तो उनकी वजह से जो कुछ भी मैंने आज तक सीखा, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन डॉक्टर जॉन का है। और उनकी मुझे पोएम का एक जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम है प्रोफीरियस लवर, उनका मुझे क्रिटिकल एनालिसिस मिला है। तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी उसको शेयर कर दूं ताकि आप लोगों को जो है एक आइडिया हो जाए कि क्रिटिकल एनालिसिस जो होते हैं किस तरह से किए जाते हैं किसी पोएम के, किसी नॉवल के, किसी भी चीज़ के, और थिंकिंग को कैसे डेवलप किया जाता है, किस तरह से सोचा जाता है। उसमें ज़ाहिर है ऑब्वियसली आपकी प्री एग्जिस्टिंग जो आपने पहले रीडिंग की है वो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, नॉलेज, जो आपकी लैंग्वेज पे कमांड कैसी है, कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए लैंग्वेज के ऊपर। इसी तरह से आपका एक टेम्परामेंट होता है जिसको आप कहते हैं कि फिलोसॉफिकल टेम्परामेंट, वो आपको उसी वक्त डेवलप होता है जब आप गौर व फिक्र करते हैं, सोचते हैं, अदरवाइज वो डेवलप नहीं होता। तो जॉन जो है ही हैज़ बीन प्रोफेसर इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, और उन्होंने जो है आजकल लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी में जो है इसको लैंकेस्टर भी कहते हैं, लैंकेस्टर भी कहते हैं, तो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस आई हैव हर्ड। तो वहाँ पे जो है प्रोफेसर हैं डॉक्टर जॉन। तो he was when I went to England he was kind of 42 years old, और अब जो है तकरीबन 60 के करीब होंगे वो। तो उन्होंने जो है अपना लेक्चर जो दिया था तो तकरीबन 18 मिनट्स का है, इस तरह से है। तो आपको बहुत ज़्यादा जो है उसका फ़ायदा होगा। और अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन्स हो, कोई प्रॉब्लम हो समझने में, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रहा है, ज़ाहिर वो इंग्लिश में है, तो मैंने अपने लेक्चर्स को उर्दू में इसलिए कन्वर्ट किया कि बिकॉज पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई स्पीक। Apart from few people, many people do not understand my accent. So I try to talk to the people in Urdu rather than English. So that was my decision. But obviously John does not know any language apart from English. So he has delivered his lecture in English, and I hope that you will find it very interesting. If you've got any questions or anything, you are welcome, you can ask me. And at the same time, let me tell you the procedure, how you are going to listen to this lecture. आपने सबसे पहले जो है उसमें ये करना है कि प्रोफीरियस लवर पोएम का नाम है, वो आपने जो है डाउनलोड कर लेनी है नेट पे, प्रोफीरियस लवर बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है, और उसके बाद जो है उस पोएम को आपने एक दफ़ा पढ़ना है, प्रोफीरियस लवर को अच्छी तरह से पढ़ना है, उस पर सोचना है, उसकी स्टोरी को, उसकी समरी को थोड़ा सा जहन में रखना है, अच्छे तरीके से उसको एक दफ़ा आप देखेंगे, और उसमें से देखेंगे कि क्या क्या आपको समझ आता है, क्या क्या आपकी नज़र में जो है इम्पॉर्टेंट है, आप किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आप उस पर हो सकता है कि अगर आपको कोई, जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तानी एडिशंस मिल जाते हैं किताब महल के, फेमस के, वट, तो आई डोंट रिकमेंड दोज बुक्स, बट स्टिल अगर आप पढ़ना चाहें उनको तो उसके अंदर मौजूद हैं ये। और इंडिया में भी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी जगहों पे आपको मिल जाएंगे सारी चीज़ें। तो आप जब उसको पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप जो है उसके पॉइंट्स देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से इंटरप्रेट किया हुआ था। दैट इज़ द आउटडेटेड क्रिटिसिज्म। ये पुराना क्रिटिसिज्म था, अब इसकी वैल्यू इतनी नहीं रही है, अब रीसेंट क्रिटिसिज्म होता है। जब मैं इंग्लैंड में था तो जॉन जो है माय प्रोफेसर, ही टोल्ड मी कि आपने 20 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स पुरानी बुक इस्तेमाल करनी है, इससे ज़्यादा पुरानी बुक्स जो हैं वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्रिटिक्स को आपने इस्तेमाल नहीं करना जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं, या क्रिटिक्स वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस रहे हों।
उसके अलावा आप जैसे टी एस एलियट है या विलियम वर्ड्सवर्थ है, कॉलरिज है, या इस तरह के ये एरिस्टोटल है, तो इन क्रिटिक्स को तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उनके अलावा जो क्रिटिक्स हैं ज़्यादातर, जो से फॉर एग्जांपल मैथ्यू आर्नल्ड को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर साथ ही साथ एक और क्रिटिक था फिलिप सिडनी था जिस तरह, तो उसको आप बहुत ज़्यादा, वो कोई ऑथेंटिक क्रिटिक नहीं है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, या उसके कोटेशंस को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं समझा जाता। इस तरह डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो था वो भी बहुत कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी क्रिटिक नहीं था। हाँ, AC ब्रेडली जो है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, वो बहुत कमाल उसकी बुक है, अगर आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर उसको पढ़िएगा, एंड यू वुड लव इट। AC Bradley was professor of English in University of Liverpool and University of Oxford. तो वो बहुत ज़्यादा उसके जो है वो लेक्चर्स हैं शेक्सपियर के ऊपर, तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। इफ़ यू एवर गेट अ चांस, डू रीड दैट बुक। उसके अलावा पोर्फिरियस लिवर जब आप पढ़ लेंगे, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म थोड़ा सा देख लेंगे, सारा नेट पे उसके बारे में समरीज वगैरह ये वो चीज़ें देख लें पोर्फिरियस लिवर पे, एंड देन go for this particular video and you would love it। आप जब उसको देखेंगे, और जब आप जो ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो कि एमफिल कर रहे हैं या PhDs कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है कि आप जब इसको सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाउ द थिंग्स गो। एक अंग्रेज़ बंदा जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है वेल रेड बंदा है, और मैं ऐसे ही किसी की तारीफ़ नहीं करता हूँ, बिकॉज ही वॉज द वन जिसने जो है मुझे हर चीज़ में ट्रेन किया, रिसर्च में, क्रिटिसिज्म में, थ्योरी में, और बहुत सारी चीज़ों में, और उसने सारी राइटिंग टेक्निक्स, राइटिंग स्टाइल्स, एवरी सिंगल थिंग आई ओव हिम। तो आई ओव हिम लॉट। तो दिस इज हाउ इट गोज। तो यू नीड टू पे अटेंशन टू एवरीथिंग ही स्पीक्स। अगर आपको समझ नहीं है, आप दोबारा उसको रिवाइंड कर लें, आप दोबारा उसको सुन लें, मीन्स उधर ले जाएं, आप दोबारा उसको पीछे करके दोबारा उसको सुन लें थोड़ा सा, तो उससे आपको जो है मज़ीद चीज़ें समझ आ जाएंगी। But just try to listen to him and try to understand। आप साथ बुक में से खोल लें, या बुक एक दफ़ा पढ़ी होनी चाहिए, आपको पोएम अच्छी तरह से पढ़ी होनी चाहिए, ताकि जब वो आपको रेफरेंस दे रहा हो या कहीं से वो कोटेशंस दे रहा हो, तो आपको पता लगे कि वो किस तरह से जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, किस तरह से एनालाइज कर रहा है, उसकी लैंग्वेज के ऊपर गौर करें, उसके स्टाइल के ऊपर गौर करें, हाउ ही स्पीक्स एंड विच काइंड ऑफ जो वोकैबुलरी है, द यूज़ ऑफ वोकैबुलरी, एंड उसके जो sentence का structure है, everything will be very important if you just pay attention to it। तो still if you've got any questions or anything, I'd love to answer your questions or whatever। तो आप लोग जो है इसमें इसको सुन के फिर कमेंट्स दीजिएगा, एंड इफ़ यू लाइक इट, दिस इज़ नॉट माई वीडियो। मेरी वीडियोज़ को मैं इतना नहीं, फिर भी आपको कहूँगा कि आप लाइक करेंगे तो आपकी मेहरबानी है, नहीं करेंगे तो डजंट मैटर। बट इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आई वुड अप्रिशिएट, बिकॉज he has been my favorite professor। बाकी भी थे ज़ाहिर, ऑब्वियसली ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे, डॉक्टर एंड्रयू एंड डॉक्टर जॉनथन टाइलर, Brian Jarvis, and Professor Claire Hansen, Bill Overton, Marion Shaw, Dr. Marion Shaw, and Roger Abbottson। तो काफ़ी सारे critics जो बहुत famous वहाँ पे writers हैं, तो they were my professors there in England। But Dr. Elaine Hobby, Professor Elaine Hobby was one of them। तो Dr. Nigel Wood, who was the head of the department at that time, तो Professor Nigel Wood, तो काफ़ी सारे लोग थे जो बहुत ज़्यादा किताबों के, जॉन ने जो है बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें क्रिटिसिज्म की किताबें भी हैं, और ही इज़ बिन द एडिटर ऑफ मैनी बुक्स, और राइटर है, इंटरव्यूज़ की उसकी हैं, उसमें जो है बायोग्राफीज़ भी उसने लिखी हैं। तो ही इज़ अ ग्रेट राइटर एंड अ ग्रेट क्रिटिक। तो आई होप दैट यू विल लव हिज kind of interpretation, the way he interprets the things, and the way he looks at certain things. It's lovely, it's amazing। So wish you all the best, and try to improve yourselves as much as you can, and that is my request। क्योंकि आप लोग जो अगर मेहनत नहीं करोगे, तो you stand nowhere। Wherever you go, you'd certainly not be able to get a chance to get a good job। तो आपको पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसा उसी वक्त आपको ज़्यादा मिलेगा जब आपके स्किल्स improve होंगे हर लिहाज से। To try to work hard, and इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, and now you can listen to John's lecture। Thank you। Hello, my name is Professor John Shadd, and I'm from the Department of English Literature and Creative Writing here at the University of Lancaster।
I research and teach in a number of areas, including Victorian poetry. So I'm going to talk about Robert Browning's wonderful poem, Porphyria's Lover, first published in 1836. So just before Queen Victoria's coronation, but as I will suggest, it makes much sense, I think, to speak of the poem in Victorian terms. The poem was initially called just Porphyria, and so I will here focus primarily on Porphyria herself, exploring how she summons up various specifically Victorian visions of what we might call the idea or figure of the woman. As I do so, I will also talk about how in Browning's poem, this figure of the woman, proves to be of enormous significance, not just cultural, but also philosophical and even religious. We should begin, though, with a brief attempt to historicize the figure of the woman. So, on the one hand, we remind ourselves that within just a year of the poem, there will be a woman on the throne. On the other hand, we note that at the time, no woman could vote, and married women could not even own property. No wonder that there was much talk of the woman question. Browning is writing then at a time when the figure of the woman loomed large. She simply could not be overlooked. Indeed, in 1831, a Unitarian thinker called W.J. Fox wrote, "Upon what woman is depends what the world is." A striking claim. Our understanding of the world is, Fox suggests, dependent on our understanding of what woman is. So, who or what is the woman that is Porphyria? Well, it's difficult to say, for she's a riddling, paradoxical figure. Indeed, we might say that she is a series of paradoxes or contradictions. Through the poem, Porphyria plays, that is, a series of double roles, flitting between various Victorian female types and stereotypes. That is to say, she is somehow both angel and whore, both nurse and patient, both mistress and maid. Let us begin with angel and whore. In 1854, Coventry Patmore published a hugely popular poem called The Woman, the Angel in the House, a celebration of the married woman as almost sexless domestic angel. And in the figure of Porphyria, we do on occasions glimpse just such an angel. Note that Porphyria shut the cold out and the storm, and that she is perfectly pure, good, and without stain. So much for woman as angel. What about woman as whore? Well, the speaker of the poem is not Porphyria's husband, and is not even called her beloved, but rather her lover, her adulterous lover, we presume, for it is under cover of dark that she slips out to see him. She is quite literally a woman of the night. And that is how, on occasions, she is said to behave. She untied her hair and let the damp hair fall. In 1836, a woman who wears her hair loose when with a man who is not her husband would herself be deemed to be loose. She put my arm about her waist and made her smooth white shoulder bare, murmuring how she loved me. On to nurse and patient. The image of woman as nurse is a powerful one in Victorian period.
Think Florence Nightingale. And Porphyria does at times appear to operate almost as if she is a kind of nurse or ministering angel. She kneeled and made the cheerless grate blaze up. In this connection, we should note that when first published, Porphyria's Lover was one of a pair of poems that Browning called madhouse cells. So, is she nursing a madman? Is she visiting him in his cell at the madhouse? So, does he merely think she is his lover when she is in fact his nurse? And last she sat down by my side and called me. When no voice replied, she put my arm about her waist. But if the figure of a nurse is to some extent evoked whilst Porphyria is alive, once she's dead, she suggests the figure of a patient. No pain, felt she. I am sure she felt no pain, and so I propped her head up as before, as if on a pillow. So much for nurse and patient. On to our third and final cultural double, mistress and maid. Porphyria, that is, proves to be a riddle or paradox, not only when it comes to sickness or the scene of medicine, but also when it comes to power. In short, is Porphyria the lady of a house, or is she a servant? Is she mistress or maid, or somehow both? Well, on the one hand, she seems to be the social superior of her lover. Note that she defines him. He is Porphyria's lover. He has no name or identity of his own. Indeed, be sure, he says, I looked up to her. On the other hand, there are times when she seems to be his social inferior, as when, of course, she kneeled at the cheerless grate. Note too that she wears a shawl and that her gloves are soiled. So, Porphyria is somehow, enigmatically, both mistress and maid, nurse and patient, angel and whore. If then we had to say what Porphyria is, we might just be tempted to say that she is paradox, is contradiction. Back to 1831, W.J. Fox. Upon what woman is depends what the world is. Well, if true, and if we are thinking of Porphyria, then the world itself must be nothing but paradox and contradiction. And so it seems, for in the poem, the only glimpse that we have of the world outside the madhouse cell is a world violently divided against itself. Note how the wind and the rain rage against the trees and the lake. The rain set in early tonight. The sullen wind was soon awake. It tore the elm tops down for spite, and did its worst to vex the lake. However, for all this sense of paradox, contradiction, and doubleness, the actual strangling of Porphyria happens, I suggest, in a peculiar moment of calm, a moment where
madness comes to a standstill, and a strange kind of sanity enters. For the moment in which the speaker kills is in fact also the moment at which he is overcome by talk of goodness and reason and knowledge. She was, he says just before killing, perfectly good. I had, he says just before killing, debated what to do. At last, he says just before killing, I knew. Goodness, reason, knowledge. And these are attributes often associated not only with sanity, but also with God. And the shadow of God does, of course, fall across the scene of killing. For the speaker kills when, and only when, at last I knew Porphyria worshipped me. Put very simply, it is when the speaker becomes God, or like God, worshipped, that he kills. But why? What has God got to do with killing? Well, as Browning knew well, it was God who once instructed Abraham to kill his beloved son, Isaac. Indeed, there were many Victorian critics of Christianity who would argue that in the crucifixion of Christ, God effectively killed his own beloved son. Perhaps then, at the end of the poem, God is silent not simply because he is simply absent, but because he too is guilty of killing one whom he loved, Christ. God's silence, that is, might just be, as it were, almost strangely, the silence of guilt or even embarrassment. However, this silent God at the end of the poem is very far from a God who kills. Too far, perhaps, because Porphyria's lover is not struck dead for his killing of Porphyria. There is, alas, no divine intervention or retribution. God does not kill the killer, even though by God's own law, that is exactly what God should do. To quote the biblical book of Exodus, he who strikes a man so that he dies shall surely be put to death. So the God of the poem's very last line may have nothing to say, but at least he does not add killing to killing, death to death. Is this then forgiveness, or even grace, a world beyond punitive law? Perhaps. But God is silent, and this does disturb us. A woman has been strangled, her corpse propped up all night beside a madman, and yet God has not said a word. But read that again. And yet God has not said a word. We cannot, I suggest, avoid here seeing or hearing, and God has not yet said a word. In which case, of course, God
may not always be silent. He may yet speak later. And perhaps he does speak later, in fact, than the poem. That is to say, after the poem. For you see, the poem in the original version is mysteriously signed with the letter Z. And one Christian name for God is Z, or at least Omega, the last letter of the Greek alphabet. In the book of Revelation, God says, I am the Alpha and the Omega, the Z, as it were. At the foot of the page, under the poem, is then, or was, a sign or trace or hint of God, or at least a trace of God. In short, it is as if, even in the face of the most appalling violence and suffering, most appalling female suffering, God is still somehow to be glimpsed, but only just. It would be easy to miss him. To finish then, this poem, in making us rethink what a woman is, makes us rethink not only what the world is, but also what God is. Far-fetched? Perhaps. But in the 19th century, as ideas about women changed, so too did ideas about God. Back to Florence Nightingale, not only a nurse and feminist, but a theologian. In 1860, she wrote this: the next Christ will perhaps be female. Thank you.